Hello everyone, I am Mamta Nikam and welcome back to my YouTube channel. As I say, I am here to help you all with the concepts of mathematics. Whether you are from BE, BSc or diploma background, or you are preparing for any of your competitive exams, I am here to help you all. So आज का टॉपिक है हमारा रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। मैट्रिसेस के सीरीज में हम आज देखने वाले हैं हाउ टू फाइंड रैंक। रैंक क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है और कैसे फाइंड आउट करना होता है रैंक। तो चलो शुरू करते हैं आज के टॉपिक से। लेट अस डिस्कस फर्स्ट द what is definition of rank. So the matrix is said to be of rank R if there exists at least one minor of order R which is not equal to 0 and every minor of order R plus 1 which is equal to 0. The max rank of a matrix is the maximum order of its non-vanishing minor and it is denoted as rank of A which is equal to R. So क्या कहता है definition? Suppose हमारे पास एक matrix है, say we have a 2 cross 2 matrix. अभी 2 cross 2 में हमें माइनस क्या मिल सकते हैं? एक तो ऑर्डर 1 हो सकता है या फिर 2 हो सकता है. So we observe that the minor of order 1 is not equal to 0. Okay, the minor of order 1 is not equal to 0, whereas the minor of order 2 is equal to 0. Means the definition satisfy, ये जो conditions है वो satisfy हो रहे. R plus 1 मतलब minor के plus 1 जो order है वो क्या हो रहा है? 0 हो रहा है, 2 हो रहा है. तो इसकी रैंक क्या होगी? द नॉन वैनिशिंग माइनर मीन्स जिसके वैल्यू 0 नहीं हो रही है, ऐसे माइनर को नॉन वैनिशिंग माइनर कहा जाता है. सो यहाँ पे नॉन वैनिशिंग माइनर क्या है? ऑर्डर 1 है. सो इसकी रैंक क्या हो गई? 1 हो गई. सपोज वी हैव अ 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स. तो 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स में कुछ एलिमेंट्स दिए हैं जिसके हम माइनस फाइंड आउट कर सकते हैं. इट कैन बी ऑफ ऑर्डर 1, इट कैन बी ऑफ ऑर्डर 2 और इट कैन बी ऑफ ऑर्डर 3. Now suppose we have observed that the rank minor of order 1 is also not equal to 0, minor of order 2 is not equal to 0, but minor of order 3 is equal to 0. So इसमें अभी मैक्सिमम कौन सा नॉन वैनिशिंग माइनर है वो देखना होगा. वी हैव 2 माइनस 1 ऑर्डर 1 एंड ऑर्डर 2. तो इन दोनों में से मैक्सिमम क्या है? मैक्सिमम है 2. सो ऑर्डर क्या हो गई इसकी? 2. तो रैंक क्या हो गई इसकी? 2 होगी. So maximum non-vanishing minor order will be 2 and such will be the rank. Now whenever we will be actually solving examples, this can be a difficult part to find minors of order 1, 2 and then checking which is non-zero, which is 0 and then deciding. So for that we have a simplest method, that is by reducing the matrix by performing transformation, reducing to echelon form, reducing to normal form, and that method can give us the rank of a matrix. So क्या है ये echelon form? We will be discussing further. Temporarily just remember that we can find the rank by reducing the matrix, okay, by performing transformations, row transformation or column transformation. Okay, before we further move on to discussing what is echelon form, let's discuss few important points based on rank. The first point says if a matrix has a non-zero minor of order R, then the rank of A is greater than or equal to R. Means what? हमें जो माइनर ऑर्डर माइनर्स मिलते हैं, अभी हमने देखा है माइनर हमें 1 ऑर्डर का भी मिल गया, 2 ऑर्डर का भी मिल गया. सो इट कैन बी रैंक कैन बी इधर A 1 or either 2, so it can be greater than or equal to 1, right? We can say that way. Second point says if a matrix has all the minors of order R plus 1 equal to zeros, then rank of A is less than or equal to R. Means suppose हमें रैंक दिया है, ऑर्डर मैट्रिक्स की ऑर्डर है हमारे पास 4 क्रॉस 4, हमें ऑब्जर्व हो रहा है कि 3 4 माइनस ऑर्डर के माइनस 0 है. तो इसकी रैंक क्या हो सकती है? इसकी रैंक हो सकती है लेस देन 3. इट कैन बी 2 और इट कैन बी 1, राइट? नेक्स्ट पॉइंट इज if a matrix of order m cross n, if a matrix is of order m cross n, then what is can be the rank? The rank can be the maximum, rank can be less than the value of minimum of m and n. So if इट इज m and m क्रॉस n मतलब क्या? ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं दिया है. सपोज वी हैव अ 4 क्रॉस 3 ऑर्डर मैट्रिक्स जहाँ पे
rows अलग है, columns अलग है, right? It is not a square matrix. So in such case, the rank can be the less than value of the minimum of 4 comma 3. Now what is the minimum value of 4 comma 3? 3 is 3 term, so rank can be less than or equal to 3. It can be either 3, it can be either 2, or it can be the 1. Getting it? The next point says rank of a transpose of a matrix is same as that of a original matrix. Now we all know how to find transpose. What is a transpose? अगर आपको फिर भी नहीं पता है, you can go back to my channel and find a video regarding the transpose of a matrix. You can go through the video and clear the concept. So now this point says rank of a transpose of a matrix is that of the original matrix. मतलब क्या, suppose एक matrix दिया है हमें 3 cross 3 matrix, और अगर इसका transpose 1 2 3, और you can say 2 cross 2 लेते हैं 1 2 3 4, इसका transpose क्या होगा? इसका transpose होगा rows converted to column and column transpose converted to rows such way. तो इसका रैंक जो भी होगा वही ट्रांसपोज का होगा. Okay, that is rank of transpose is always same to the original matrix. This next point says given two matrices A and B, rank of a product of two matrices does not exceed the rank of either matrix. Means what? Suppose we are having two matrices and we have to find the rank of product of this two. A and B product हो गया, इसकी अगर rank find out करनी है तो वो क्या हो सकती है? It can be less than or equal to A and less than or equal to rank of B. मतलब suppose हमें rank of A पता है 3 है, rank of A पता है 4 है, so जो भी rank of product होगा AB वो less than A rank of A and less than rank of B ही होगा. Means it will be less than 3 only. Okay, next. Note down some important points. It says elementary transformations does not alter the rank as well as order of the matrix. Means what? Whatever the matrix is given, you perform either whatever the matrix is given, you perform either row transformation or column transformation. It doesn't alter the rank. मतलब क्या? रो ट्रांसफॉर्मेशन करके भी जो रैंक मिलेगा, सपोज हमें कुछ मैट्रिक्स दिया है एंड उसकी रैंक हमें 4 है, वही कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करके भी मिलेगा, उससे अलग रैंक नहीं मिलेगी. सेकेंड नोट सेज इफ अ मैट्रिक्स बी इज ऑब्टेन्ड by performing elementary transformations on A, then this matrix is equivalent to A. Means whatever the matrix A is given, उसको रिड्यूस करके हमें जो मिलेगा उसे हम कह सकते हैं एक नया मैट्रिक्स है B, and it is always equivalent to A only. It is not a different matrix. I hope this is clear. Okay. So as I said कि क्या है, how do we find a rank? We can find a rank by reducing a matrix to echelon form. Okay, ये echelon form कब मिलता है? जब we perform elementary transformations on it. Okay, either row transformation or column transformation. So now what is this echelon form? You can call it as canonical form also. So statement wise देखते हैं पहले. Statement says that if given a matrix A of order m cross n, then if you observe one or more elements in each of the first r rows are non-zero, the elements in the remaining rows are zero. And second point, if a first r rows, the first non-zero element appears in each row appears in column to the right of the first non-zero element of the preceding row. Or you can call it as the entries below the diagonal elements occur to be zero. Then such form is said to be echelon form. Simple language में देखते. Suppose हमें एक मैट्रिक्स दिया है, say A B C D E F G H I, एक 3 cross 3 मैट्रिक्स हमने लिया है. ओके, अभी इस मैट्रिक्स में हम जब रो ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे हमें क्या मिलता है? सपोज फर्स्ट रो हमें नॉन जीरो मिलती है, सेकेंड रो में हमेशा फर्स्ट जीरो और इसके प्रीसीडिंग
what is said, it is said first non-zero element in each row appears in the column to the right of the first non-zero element. मतलब क्या, इस कॉलम के राइट में मतलब क्या, ये सेकेंड कॉलम में, और प्रेसिडिंग रो मतलब सेकेंड रो में, तो नॉन जीरो एलिमेंट कहाँ मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। इसके आगे सी जीरो भी हो सकता है, नॉन जीरो भी हो सकता है। सिमिलरली थर्ड रो में क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन करोगे तो ये जीरो होगा, ये जीरो होगा, इसके राइट में जो कॉलम है, और प्रीसीडिंग रो मतलब थर्ड रो में यहाँ पे नॉन जीरो, ऐसे मिल सकता है। तो इस केस में क्या दिखाई दे रहा है, डायगोनल के नीचे के एलिमेंट्स क्या हो रहे हैं, जीरो हो रहे हैं। ओके, सो बेसिकली हमें क्या करना है, ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे करना है सो दैट फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट वैसे ही रहे, उसके नीचे जीरो हो जाए। सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट नॉन जीरो हो, उसके नीचे जीरो करना है। फर्दर प्रोसीडिंग थर्ड रो के थर्ड एलिमेंट नॉन जीरो, उसके नीचे जीरो करना है, एंड सो ऑन। इट कैन बी एनी m क्रॉस n मैट्रिक्स। ओके, यहाँ पे मैंने 3 क्रॉस 3 किया, यू कैन कंसिडर 4 क्रॉस 3, यू कैन कंसिडर 5 क्रॉस 5, ठीक है। तो जितने रोज अकॉर्डिंगली उतने रोज, तो हमें क्या दिखेगा, 4 क्रॉस 3 मतलब 4 रोज है, 3 कॉलम्स है, ये जीरो, ये हो सकता है, ये जीरो, ये ऐसे हो सकता है। और ऐसे भी केस हो सकता है जहाँ पे पूरी की पूरी रो एक जीरो मिल सकती है। ये कब में होगा केस, जब हम बेसिकली रो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। ओके, when here performing row transformation, such will be the case where we observe below the diagonal elements we are getting zero. Suppose we are performing column transformations. Okay, if we are performing column transformation, तो केस क्या हो सकता है, यहाँ पे केस हो जाएगा जस्ट चेंज, यहाँ पे डायगोनल के अबाव के एलिमेंट्स क्या हो गए, जीरो के, बिकॉज हम क्या कर रहे हैं, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। ओके, रिमेंबर a small trick to check whether we are going correct or not. If you are performing row transformations, diagonal के बीच नीचे के एलिमेंट्स जीरो हो गए। if we are performing column transformation, diagonal के साइड वाले एलिमेंट्स क्या हो गए, जीरो हो गए। सो एट सच केस, तो अभी तो रैंक क्या होगी, ये तो हो गया एक कैनोनिकल फॉर्म या फिर इक्विवेलेंट फॉर्म। जब इस फॉर्म में मैट्रिक्स रिड्यूस होता है, ये होता है इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। और इक्विवेलेंट फॉर्म से अभी मिलेगा हमें रैंक। तो रैंक क्या होगा, रैंक विल बी द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज प्रेजेंट इन द ट्रांसफॉर्म्ड मैट्रिक्स। ओके, सो इफ यू ऑब्जर्व हियर, स्टार मतलब मेरे नॉन जीरो एलिमेंट्स है, बाकी सारे क्या एलिमेंट्स है, जीरो। तो यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे एटलीस्ट वन एलिमेंट इज नॉन जीरो इन दिस रो, सो दिस इज ऑल्सो कंसिडर्ड अ नॉन जीरो रो। अगर एक भी एलिमेंट प्रेजेंट होगा तो वो क्या होगा, नॉन जीरो रो होगा। तो ऐसे कितने नॉन जीरो रोज है, 4 नॉन जीरो रोज है, तो इसकी रैंक क्या हो गई, 4 हो गई। वैसे यहाँ पे अगर ऑब्जर्व करोगे इस केस में जो हमने पहले डिस्कस किया था 4 क्रॉस 3 के मैट्रिक्स में, हमें कुछ एलिमेंट्स है स्टार जो है नॉन जीरो, तो फर्स्ट रो नॉन जीरो है, सेकंड रो भी नॉन जीरो है, थर्ड रो में एक एलिमेंट है नॉन जीरो, तो ये भी नॉन जीरो है। वेरएज फोर्थ रो हमें क्या मिल गया है, जीरो है, तो ये है जीरो रो। तो कितने नॉन जीरो है, तो 3 है, तो ये बन जाएगी रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। So when we perform row transformation or column transformation, the matrix is reduced to an echelon form, and that echelon form tells us or gives us a number of non-zero rows present in that matrix. That non-zero rows is nothing but a rank of a matrix. I hope this is all clear to everyone. Okay, so let's discuss an example. Let's find out rank of this matrix. So given as a matrix, if we observe how many rows we have 4 rows and we have 4 columns. So it is a 4 cross 4 matrix. We will perform row transformation on this. Row transformation करेंगे तो हमने डिस्कस किया क्या होना चाहिए, फर्स्ट एलिमेंट के नीचे के एलिमेंट जीरो, डायगोनल से शिफ्ट हो जाओ, सेकेंड रो सेकेंड एलिमेंट के नीचे एलिमेंट जीरो, फिर से डायगोनली शिफ्ट हो जाओ, थर्ड रो थर्ड एलिमेंट के नीचे एलिमेंट जीरो। ये प्रोसेस हमें करनी चाहिए, जो डायगोनल एलिमेंट्स है उसके नीचे जीरो आने चाहिए। इस प्रकार से हमें क्या करना है, रो ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म करना है।
जिससे हमें क्या मिलेगा, इक्विवेलेंट फॉर्म मिलेगा, और इक्विवेलेंट फॉर्म से हमें मिलेगा नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज. Okay, so let's proceed. So given is matrix A. Let's write down the given matrix first. 2 minus 2 0 6, 4 2 0 2, 1 minus 1 0 3, 1 minus 2 1 2. Okay, now as I said, we need to make or turn the elements which are below the first element to 0. But now here remember one thing, एक small trick क्या है, first element probably try to or see if there is any 1 in any of the other row and take that 1 to the first row. इससे help क्या होगा, anything you multiply by 1 or divide उसका addition करने में easy हो जाएगा. So now here what you observe, we have three. We observe third row and fourth row both have first element as 1. We will interchange either of the third or fourth row with first row. Let's interchange the third and first row. So interchange कर रहे मतलब क्या होगा, we are performing row transformations. So ये होगा R1 interchange R3, performations will be on R1. So matrix A क्या होगा, now first row will be 1 minus 1 0 3. Second row will remain as it is 4 2 0 2. Third row will be 2 minus 2 0 6, and last row will be 1 minus 2 1 2. Right, now here we have 1. Now using this 1 हम क्या करेंगे, इसके नीचे जो एलिमेंट्स है ये सारे उनको जीरो करेंगे by performing row transformation. तो 4 0 कब होगा, 4 minus 4 होगा तब 0 होगा. R2 रो में है तो can we perform it as R2 minus 4 R1 using the first row. So 4 minus 4 will give us 0. Similarly R3 row में first element है 2. So we can perform here R3 minus 2 R1 and R4 minus R1. ये transformations करेंगे तो ये elements क्या होंगे, 0 हो जाएंगे. So this matrix will be now 1 minus 1 0 3 as it is. Second row होगा 4 minus 4 0. Now next elements 2 minus and minus will be plus, 2 plus 4 that is 6. 0 minus anything 0 that's ये 0 हो जाएगा. And next will be 2 minus 4 3s are 12 तो ये होगा minus 10. Right, third row 2 minus 2 0. Then further क्या होगा, minus 2 minus minus plus 2, minus 2 plus 2 0, 0 minus 0 तो 0. 6 minus 6, 3 2s are 6 है तो 6 minus 6 0. And last row 1 minus 1 0. Then minus 2 plus 1 तो ये होगा minus 1. 1 minus 0 तो 1 and 2 minus 3 that is minus 1. ये मिल जाएगा हमें मैट्रिक्स. नाउ इफ यू ऑब्जर्व इन दिस मैट्रिक्स, एक रो जो है वो पूरी की पूरी क्या मिल गई हमें, 0 मिल गई. क्या करते हैं, हम इसे शिफ्ट कर देते, इंटरचेंज कर देते थर्ड रो और फोर्थ रो को. ओके, सो ये इंटरचेंज करोगे तो R3 माइनस R4 इंटरचेंज होगा तो ये मैट्रिक्स क्या होगा, 1 minus 1 0 3 0 6 0 minus 10 0 minus 1 1 minus 1 0 0 0 0. Right, now as I said इस आसानी होगी अगर एलिमेंट 1 होगा. नाउ फर्स्ट रो के डायगोनल सेकेंड एलिमेंट रो का सेकेंड एलिमेंट यहाँ पे है 6. यहाँ पे अगर 1 होता तो और ज़्यादा आसान होगा. 1 है हमारे पास थर्ड रो में, लेट्स इंटरचेंज दिस ऑल्सो. लेट्स इंटरचेंज R2 एंड R3. तो ये होगा मैट्रिक्स 1 minus 1 0 3 0 6 0 minus 10 0 sorry we are interchanging R2 and R3, so you have a 0 minus 1 1 minus 1 0 6 0 minus 10 and last row 0 0 0. And to eliminate now सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट वैसे ही रखना है, इसके नीचे के एलिमेंट्स क्या करने हमें, 0 करने. एक तो ऑलरेडी 0 है तो इस 6 को 0 करना है.
6 0 कब होगा? If we perform R3. Now since here is minus, we need to take plus, opposite sign, right? So R3 plus 6 times R2. So 6 minus 6 0 होगा. तो इस ट्रांसफॉर्मेशन के हिसाब से ये हो जाएगा now मैट्रिक्स 1 minus 1 0 3 0 minus 1 1 minus 1 0 0 0 plus 6 6 minus 10 minus 6 that is minus 16 0 0 0 0, right? Now further moving diagonally, थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट तो ये है, इसके नीचे जीरो करने चाहिए बट ये तो ऑलरेडी जीरो तो जरूरत नहीं है. सो यहाँ पे हम क्या होगा, we need to stop the transformations. Now when we observe for here क्या हो जाएगा, we observe that the transformations are stopped. diagonal elements जो भी है, that is this is the diagonal elements, इसके एक नीचे क्या है हो गए, so सारे जीरो आ गए. So now this is our obtained is echelon form. This form is our echelon form, or you can call it as canonical form. Now when we observe an echelon form, we have to check how many number of rows are zero rows and non-zero rows. Okay, so how many number of non-zero rows we have? Let's first check how many number of zero rows we have. नंबर ऑफ जीरो रोज, एक रो टोटल, फोर्थ रो क्या है, सारे एलिमेंट जीरो है तो वन रो जीरो रो है. एंड हाउ मेनी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज? सो वी ऑब्जर्व फर्स्ट रो सारे एलिमेंट्स है, सेकेंड रो में एक जीरो है बट बाकी सारे नॉन जीरो. सिमिलरली थर्ड रो में दो नॉन जीरो है तो दो जीरो है. सो देयर आर थ्री रोज विच आर. So we observe we have one zero row and three non-zero rows, and the definition says number of non-zero rows is the rank of a matrix. So we have three non-zero rows. The rank of a matrix क्या होगा? 3 होगा. Rank is represented as row, so row of A is equals to 3. So such is the way to evaluate the matrices, reduce the matrices, and to find the rank of a matrix. Here we performed row transformation. You can also perform the same by performing column transformations. So column transformation में क्या होगा? So we can check by column transformation also. Let's solve the same example by column transformation. Given matrix है A 2 minus 2 0 6 4 2 0 2 1 minus 1 0 3 1 minus 2 1 2. ये है मैट्रिक्स. नाउ कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करना है, मतलब क्या करना है, फर्स्ट कॉलम के साइड में एलिमेंट्स जीरो करने, मतलब फर्स्ट रो के साइड वाले सारे एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए. शिफ्ट डायगोनली सेकेंड रो सेकेंड एलिमेंट, और यू कैन से सेकेंड कॉलम का सेकेंड एलिमेंट उसके साइड में जीरो होना चाहिए. शिफ्ट डायगोनली थर्ड कॉलम का थर्ड एलिमेंट उसके साइड के एलिमेंट्स जीरो होना चाहिए. such type we have to follow. So now we have to perform such column transformation first, so that first column के साइड वाले एलिमेंट जीरो हो जाए. Now as I said, probably अगर वन होगा फर्स्ट प्लेस में तो easy हो जाता, but there is no one in the corresponding columns. In rows there it is, but there is no one in corresponding column at first place. कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, रिमेंबर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे होगे तो सिर्फ कॉलम ही करना है, बीच में रो नहीं लाना है. So to perform column transformation there is no one in the first place, so it's okay. Let's proceed. But there is 2 here. Using this 2 we will evaluate. So minus 2 plus 2 करोगे तो second element 0 हो जाएगा, second column का element. तो ये we can perform, sorry, C2 plus C1. थर्ड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट ऑलरेडी जीरो है, नो इश्यू. फोर्थ कॉलम दैट इज C4 minus, if we multiply 3 to this first column, 3 to the 6 होगा, so 6 minus 6, so 3C1. we can do this. तो मैट्रिक्स क्या बन जाएगा? टू
4 1 1. We are writing the column wise transformation, तो पहले columns वैसे ही लिख के लेते. First column will remain as it is, 2 4 1 1. Second column -2 plus 2 0. Then 2 plus 4 6, -1 plus 1 0, -2 plus 1 -1 0. Third row वैसे ही रहेगा because there is already a 0, so we are not performing anything on third column. Then 6 minus 6 0. Then 2 minus 3 into 4, तो that is 12. तो ये क्या हो जाएगा -10. 3 minus 3 0. 2 minus 3 minus 1. ओके, ये मिल जाएगा मैट्रिक्स. नेक्स्ट वी हैव टू शिफ्ट कॉलम वाइज, तो नेक्स्ट कॉलम को शिफ्ट हो जाएंगे. सेकेंड कॉलम का सेकेंड एलिमेंट 6 है और इसके साइड के एलिमेंट्स को क्या करना है, हमें 0 करना है. ओके, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन. Now here to make this column 0 element 0 second fourth row, sorry fourth column का second element, there is no common term here, so just cross multiply by the terms here, easier way. ये तो ये क्या हम कर सकते हैं, we can do the transformation as say 6 times c4 plus 10 times c2 easily मिल जाएगा. तो ये यहाँ पे -10 है इंटू 6 -60 प्लस 10 इंटू 6 60, तो ये 0 हो जाएगा. सो देयरफॉर हियर इट विल बी मैट्रिक्स A will be now 2 4 1 1 as it is, then 0 6 0 minus 1, then 0 0 0 1 and -60 plus 60, तो ये 0 होगा. 0 minus 0 और 0 plus 0 0, -1 अभी यहाँ पे क्या है -6 एंड -10 हो जाएगा, तो ये हो गया -16. राइट, नाउ फर्दर डायगोनली मूव ऑन करोगे तो ऑब्जर्व होता है यहाँ पे कि थर्ड कॉलम का थर्ड रो ऑलरेडी 0 है, इसके साइड एलिमेंट भी 0 है. राइट, बट वी ऑब्जर्व वन थिंग हियर दैट थर्ड कॉलम और फोर्थ कॉलम में पहले 3 एलिमेंट्स 0 है, लास्ट के एलिमेंट में कुछ एलिमेंट है. तो इससे यूज करके हम C4 को और रिड्यूस कर सकते हैं. वी कैन परफॉर्म अ ट्रांसफॉर्मेशन हियर एज ए C4 प्लस 16 टाइम्स C3. इससे होगा क्या, ये होगा -16 plus 16 and that will turn out to be 0, so it will be reduced furthermore. Okay, so when you perform such transformation, ये matrix हो जाएगा now 2 4 1 1 0 6 0 minus 1 0 0 0 1 0 0 0 minus 16 plus 16 0. And we observe the fourth column is totally a zeroth column. बाकी columns में एक तो element है जो non-zero. So we observe how many number of non-zero columns, 3, and how many number of zero columns, that is 1. Number of non-zero columns gives us the rank. So यहाँ पे again rank of A क्या हो जाएगा 3. So either you perform column transformation or row transformation, you are going to get the same rank for the matrix. Fine. So basically easier होता है रो ट्रांसफॉर्मेशन करना, बट अगर तुम्हें कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से ज़्यादा इजी लग रहा है, यू कैन प्रोसीड विद दैट. नेक्स्ट, we can also find rank of a matrix by reducing a matrix to normal form. So what is normal form of a matrix? So normal form is nothing but a matrix of the form in form of identities. Okay, so there are 4 types of normal form of a matrices. First is either you get only an identity matrix. Now here IR denotes an identity matrix, or you can say unit matrix of some order R. So A जो भी matrix दिया है, suppose it is a 3x3 matrix, order क्या है इसका 3. You can get 3x3 identity matrix. So क्या होगा, either you can get an identity matrix of order R, or
an identity matrix with a column which is a zero column. मीन्स क्या, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गया से 1 0 0 1 एंड एक साथ में कॉलम भी मिल गया जो पूरा का पूरा क्या है, जीरो कॉलम. और you get an identity matrix and a row which is a zero row, or an identity matrix with column as well as row which is a zero row. Any of such forms is in normal form of a matrix and this also gives the rank. So यहाँ पे rank क्या होगा, दो rows है which are non-zero, or you can say दो columns है which are non-zero, so rank हो गई 2. यहाँ पे दो rows है which are non-zero, rank हो गई 2. यहाँ पे दो rows है non-zero, एक row पूरी की भी पूरी zero है, so rank हो गया 2. Such can, so reducing a matrix to normal form also gives us a rank of a matrix. So remember R is, number R is obtained, whatever R here is nothing but a rank or the order of that identity matrix. Here now to solve the rank or to evaluate a normal form, we will use both row transformation and column transformation. Because हमें देखो आइडेंटिटी करना है, मतलब क्या करना है, साइड के एलिमेंट्स को और नीचे के एलिमेंट्स को भी जीरो करना है, दोनों करना है. हमने पिछले देखा एग्जांपल अभी जहाँ पे रो किया तो नीचे के एलिमेंट्स जीरो किए थे, जब कॉलम किया तब साइड के एलिमेंट्स जीरो किए. हमें यहाँ पे दोनों चाहिए तो दोनों ट्रांसफॉर्मेशंस करेंगे. So remember, whenever you are asked to reduce a matrix to normal form, in that case only we perform both row and column. Otherwise, we perform either row or column. And third point says elementary transformation does not alter the rank of matrix. Means what? Either you perform row first or column first. It's your choice. तुम्हें चाहिए तो पहले सारे रो कॉलम्स कर लो, फिर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कर लो, or you can go simultaneously row and column, or perform first column and then row transformations. That is not going to alter the rank of a matrix. So let's discuss an example here. Given is a matrix. Now here we observe there are 3 rows and 4 columns. So this is a 3 cross 4 matrix, and now we have to reduce this matrix to normal form. Okay, we have to find a matrix rank of a matrix by reducing to normal form. So normal form मतलब identity matrix आना चाहिए. So let's perform transformations. Given is a matrix A 1 2 1 0 minus 2 4 3 0 1 0 2 minus 8. This is the transformation. What we'll do, we'll first perform row transformation on this matrix and then column. Simultaneously जाएंगे रो और कॉलम में. So रो ट्रांसफॉर्मेशन करोगे मतलब क्या करोगे, इस फर्स्ट एलिमेंट के नीचे के एलिमेंट जीरो करने. So we have already 1 as a first element which will make it easier for us further. So first transformation क्या हो सकता है, R2 plus 2R1, it will be on second row. Because यहाँ पे माइनस साइन है हमने यहाँ पे लिया प्लस, ऑपोजिट साइन से वो जीरो हो जाएगा. एंड क्या कर सकते हो, थर्ड रो पे R3 पे ट्रांसफॉर्मेशन होगा R3 minus R1. So according to this क्या मिल जाएगा, फर्स्ट रो as it is 1 2 0, then minus 2 plus 2 0, 4 plus 2 6, 3 plus 2 5, 0 plus 0 0, 1 minus 1 0, 0 minus 2 minus 2, 2 minus 1 1, minus 8 minus 0 minus 8. ये हो गया फर्स्ट रो के नीचे एलिमेंट जीरो. नेक्स्ट साइमल्टेनियसली व्हाट विल डू, फर्स्ट कॉलम के साइड के एलिमेंट जीरो कर देंगे. नाउ दैट इज विल परफॉर्म कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन. So to perform column transformation, what it will be, on C2 it can be C2 minus, sorry, 2C1, then C3 minus C1, fourth column में first element तो already zero है. So as per this transformations, this will be 1 0 0 first column as it is, second column 2 minus 2 0, 6 minus 0 6 minus 2 as it is, anything minus 0 same elements मिल जाएंगे. 1 minus 1 0 5 1 0 0 minus 8. Right, now there is no 1 here in the second row or second column, but we can do this. 6 is multiple of 2, it will be easier for us to perform the transformation.
क्या कर सकते हो, सेकेंड रो के नीचे का एलिमेंट जीरो करना है तो क्या कर सकते हैं, और यू कैन फॉर easier one you can shift this rows and then perform, both ways you can do. So we can perform here 3c3 plus c2, 3 into c3 मतलब 3 into minus 2 will be minus 6 plus 6 equals to 0 मिलने वाला है. So such can be the transformation we can perform here. तो ये होगा मैट्रिक्स नाउ 1 0 0 0 0 6 5 0 0 6 minus 6 plus 6 0. Now here it is going to be 3 plus 5, that is 8, minus 8 and plus to 0 here. Sorry, this is going to be 8 into 3, so that is 24. So ये होगा minus 24, right? ये मिल गया मैट्रिक्स. Now as we said, we can corresponding element, now second row का second element उसके साइड के एलिमेंट्स को जीरो करना है तो उसे क्या करोगे, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म करोगे. सो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, और नाउ अगर यहाँ पे कॉलम करना होगा तो हमें अल्टरनेट मतलब वैसा वैसे से मल्टीप्लाई करना होगा, 5 इंटू 6 6 इंटू 5. और एक ट्रिक अगर और एक स्टेप अगर देखोगे यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे, 8 and 24 it is a multiple, both terms have multiples in third row. So we can say we can divide this third row by 8 also. If we divide this third row by 8, क्या हो जाएगा ये मैट्रिक्स, थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा. 1 0 0 0 0 6 5 0 0 0 1 minus 3. And now what you can do here, what ये reduce हो जाएगा 1 and 3, right? तो इससे आसानी क्या होगा, अगर मैंने इन कॉलम्स को शिफ्ट कर लिया तो कुछ मिल सकता है क्या, देखते. सपोज आई शिफ्ट दिस कॉलम ना, suppose I shift the column C3 and C4, sorry interchange I need to say. तो क्या होगा ये होगा 1 0 0 0 6 0 0 0 minus 3, right, and 0 5 1. Okay, now further फिर भी ये 6 के साइड के एलिमेंट 0 नहीं हो गया है. ठीक है, देखते हैं आगे क्या कर सकते हैं. क्या होगा, इसके 6 के नीचे 0 हो गया, 6 के साइड में 0 चाहिए, 6 के साइड में 0 चाहिए, तो ये 5 को कैसे भी करके हमें 0 करना होगा. तो यहाँ पे वो ट्रांसफॉर्मेशन तो करना ही होगा जो हम अवॉइड कर लेते. सो ये हो जाएगा 6 times C4 minus 5 times C2. ओके, सो यहाँ पे होगा A equals to 1 0 0 0 6 0 0 0 minus 3 and 0 5 6 30 30 minus 30 0. Now here 1 into 6 6 minus 0 ये हो जाएगा 6. And further you can also reduce this 6 by using third column. तो third column को use कर क्या हो सकता है, C4 plus 2 times C3, right? So ये क्या होगा मैट्रिक्स now, this matrix will be 1 0 0 0 6 0 0 0 minus 3 0 0 6 minus 2 into 3 6, तो ये होगा 0. Now if you observe हमें क्या चाहिए, बट नॉर्मल फॉर्म चाहिए, मतलब एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स चाहिए. आइडेंटिटी मैट्रिक्स चाहिए मतलब ये एलिमेंट्स 1 के फॉर्म में चाहिए. सो यू कैन डू divide this columns, you can divide C2 by 6, you can also divide C3 by minus 3. ये हम पहले भी कर सकते थे, पहले किया होता तो भी चलता, नो इशू. लास्ट में किया तो भी नो इशू. We know elementary transformation is not going to alter the rank of a matrix. Okay, so now performing this transformation, ये होगा 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0. Now if you observe here, we have obtained an identity matrix of order 3 because 3 non-zero rows है,
So this is an identity matrix of order 3, and we have get one column which is a 0 column. So this is the obtained normal form, and since we have obtained an identity matrix of order 3, rank of this given matrix is going to be 3. Such is the way to find out the rank of a matrix. हमने क्या देखा है इस लेक्चर में? हमने देखा कि कैसे रैंक फाइंड आउट किया जाता है by reducing it to either echelon form or by reducing it to a normal form. So this was all about today's video, जहाँ पे हमने रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स सीखा. सो मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में. तब तक के लिए please do like, share and subscribe my YouTube channel for such conceptual videos. Thank you.